देखिए अगर आप पीछे भी रहते हो तो कितना पीछे रहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट गेम में हम 160 रन पीछे हो गए थे, तो वो एक्चुअली ऐसे विकेट पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हमारा फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर देखें तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसेंट स्कोर, 245 ऑन दैट पिच। तो हमारी बात यही हो रही थी कि अगर जब उनका पार्टनरशिप हुआ था, हमारी बात यही हो रही थी बीच में कि ज़्यादा आगे जाने नहीं देना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और ऐसे ऐसे दिन होते हैं, बट अगेन उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर आप इतना पीछे भी रह गए तो यू ऑलवेज़ नीड टू फाइंड अ वे टू कम बैक इनटू द गेम। बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे पता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस होती है, बट यू नो एप्लीकेशन बैट्समैनों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि हम पीछे पिछली बारी जहाँ जहाँ हमने टूर किया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, कई दफ़ा हम गेम के पीछे थे, बट हमने काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाकर उसको ख़त्म किया, उसके आगे गए। ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम जो गैबा में जो टेस्ट मैच जीते थे उसमें हम काफ़ी पीछे थे, बट ये स्ट्रेंथ लड़कों को लाना ज़रूरी है और दिस इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंग। लड़कों को अपने आप से ये सब चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। एंड वीव हैड अ गुड चैट। हमने बात की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में जब प्रेशर टीम के ऊपर होता है। तो I mean, I honestly don't know too much about that. Looks, uh, the conditions looks pretty similar to what it was. The pitch looks similar to what it was in Centurion. Maybe not so much grass, but there is enough covering of grass on the pitch. But yeah, the overhead conditions will matter. I think it's pretty hot here compared to Centurion. Centurion was a little cooler the first 2 days. So yeah, again, when we played last time here, 2018 and 21, the guys, 21 I wasn't here, but the guys were telling me it was pretty similar, the conditions, the overhead conditions. But yeah, we know exactly what is required when the conditions are like that. So based on how the pitch is, how the conditions are, you got to respond to that. Look, honestly, I've not thought too much on that. Although we've had a brief chat with the management, the coaching staff, what we want from this game and what we want from the bowlers in this game. We've not completely finalized our playing 11. Obviously, everyone is available for selection. There's no injury concern. All of them who are here are available to play. We'll sit down in the evening and decide what is the right one. But having said that, I still feel that sometimes we've got a little bit of inexperience in our bowling, and sometimes when you have that, you got to show some faith in them, show trust in them, and that can happen to any team. But obviously for us, like I said in the last post-match press conference about Prasidh playing his first game, we all get nervous when you're playing your first game. It's understandable, but I thought, like I said, and I'll still back that thought of mine, saying that he's got good ability to succeed at this level, and especially in this format. So it's just about showing faith and trust in everyone, and getting the job done from them. Yeah, I think so. Absolutely. Test cricket is something that we all have to protect and give importance to. It's just not one or two countries' responsibility. It's all the nation who are playing. It's their responsibility to make sure that we keep it nice and entertaining. And yeah, if you see around the world, a lot of solid Test cricket is being played, which is good. In the last 2 or 3 years, you've seen results everywhere almost. So yeah, it's competitive cricket. We know that. So it's everyone's duty to make sure that
it stays nice and healthy, and it stays competitive at the end of the day. That is what people come and would want to come and watch. Competitive Test cricket being played, a lot of skill being displayed on the field. So yeah, it's everyone's responsibility. I don't know. Honestly, to be honest, there's not much difference. Like we know, it's one ball it takes for number three to go in and bat, and sometimes when the opener gets injured in the first inning, number three has to walk out and open the batting. So I don't see much difference there. It's a very individual thing as well, like how you want to think about batting in different slots. Like Gill is very smart and very he understands his batting pretty well, and obviously it's he prefers that number. He's batted in Ranji Trophy around that position a fair bit. He's opened only limited overs cricket, but has opened in Test cricket as well. But that was his preference. He feels that he can do well for us batting at that position. And yeah, it was very individual. It is an individual thing as to how you think about certain positions where you bat. I personally hated batting at number three, so that's my opinion on that. Either you open the batting or you just wait and go a little down the order, number 5 or 6. But now since I started opening the batting from number 3 onwards till number 7, I don't think it's the right position for anyone. नहीं देखिए, हंगर लेवल तो काफ़ी अच्छा है टीम का, क्योंकि सारे यंग लड़के हैं. तो यंग ये उम्र में अगर आपका हंगर नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है. सीरीज़ जीतना, ड्रॉ करना, जब आप बाहर जाते हो तो ये सबसे बड़ा गोल रहता है आपका. अगर आप सीरीज़ नहीं जीत पाए तो सीरीज़ एटलीस्ट सामने वालों को जीतने मत दो. और ये लिस्ट विस्ट आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू मी अ लॉट. हम काफ़ी प्राइड लेते हैं इंडिया के बाहर खेल के मैचेस जीतने की और सीरीज़ जीतने की. तो कोशिश हमेशा से ऐसे ही रहती है, और बातचीत जो ड्रेसिंग रूम में होती है वो इसके दौरान ही होती है कि कैसे मैच जीतना है, क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी. क्योंकि टेस्ट मैच आपको पता ही है कि 1 या 2 दिन का गेम नहीं होता है, 1 या 2 सेशन का गेम नहीं होता है. इट इज़ 5 डे गेम. तो ऑब्वियसली लंबे समय तक आपको गेम में रहना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हमको पता ही है कि एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो रिज़ल्ट मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंट रहना पड़ता है. और ये सब चीज़ लड़कों को पता है. लड़के हालांकि यहाँ पर आए नहीं है, ज़्यादा लड़के आए नहीं है, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, बट उनको पता है कि कैसे मैच जीता जा सकता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, चैलेंजेस क्या क्या है जब आप ऐसे ग्राउंड पे खेलते हो. तो ये सब चीज़ के बारे में हमारी डिस्कशन हुई है. तो होपफुली अगर ये सब चीज़ हम ध्यान में रख के खेलेंगे तो आई थिंक जो रिज़ल्ट हमको चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा.